Good morning, student. Today we are going to start new point of this lesson, latent heat. Yes, what is the latent heat? For the studying the latent heat, we have carried some experimental activity. So, with the help of this experimental activity, we have learned the latent heat. So, let us start the latent heat. So, in a latent heat, we have carried some experimental activity before learning the latent heat. Just and we have understood the concept of the latent heat. Yes, for its we have arranged one experimental activity. Those arrangement I have tried to shown on the screen. Yes, okay. So let us draw the diagrammatic representations on the screen. This is a tripod stand. Yes, okay. We have arranged the tripod stand on a table. Yes, this is a tripod stand. We have arranged on the table. On this tripod stand, we have get the wire gauze, and on the wire gauze, we have arranged the one glass beaker having 500 ml volume. More than half, we have filled it with the water. More than half, yes, we have filled with the water. This is the water here. We have added the water. Again, with the help of the iron stand. This is the iron stand. With the help of the iron stand, we arrange the thermometer as shown in a figure. चलिए अभी ये फिगर में जैसे मैंने अरेंज कर दिया है उसी तरह से यहाँ पे उसको थर्मोमीटर को अरेंज करना है. कीप इन योर माइंड थर्मोमीटर mercury bubble must insert into the water is important here. Remember here. Yes, initially we will take readings of the water. Just that's we will get near about 26 degrees Celsius. That is the initial temperature of the water. Yes, that is a 26 degrees Celsius. We have take the readings. Yes, and noted in your observation table. Again, we have take the Linsen burner. This is a Linsen burner, and such Linsen burner we have arranged yes beneath the tripod stand, and we have ignite the burner. And after the ignition of the burner, yes, heating goes starts. And when heating goes to start, that time heat energy is absorbed by the water because it is a one phenomenon. Always it is transferred from higher concentration to the higher concentration to the lower concentration. Just like this, and heat is absorbed by the water. Yes, and its process goes to the continue here. And when देखिए first reading initially reading we have got it 26 degrees Celsius and continue keep it heat. Yes, at a certain fixed raising temperature of the thermometer is near about 100 degrees Celsius. Near about how many degrees Celsius? 100 degrees Celsius. We get the change here. Yes, which change we have get it? Means the liquid phase is converted into vapor. Liquid changes goes into vapor. Such vapors we have gets here. Yes, arise here. And such changes, that is a changing phase. But how we have get the change in phase? At a certain fixed temperature. Certain fixed temperature, that is 100 degrees Celsius. Yes, okay. When you have heat continue, that time water absorb the heat, temperature goes to the increases, but does not show any change in their phase. Yes, even though the temperature is increasing. Okay, but when the temperature reaches at a certain fixed 100 degrees Celsius point, that time water converts into vapor. That is vaporization. We have learned here. Before it, yes, okay, reaching at a point 99.9 degrees Celsius can gets the changes in the phase? No. Okay, but when it reaches a certain fixed point 100 degrees Celsius, it goes to the change in phase. Okay, are you clear? But before it,
Yes, after reaching the 99.9 degrees Celsius, we do not get the change in a phase there. Yes, before in that scheduled time, heat is continue, temperature goes also increases, but can't show any none change here. Okay, that at that time, where is heat gone? Yes, okay, that is hidden heat. We have identify here, and such hidden heat we have identified. Yes, that's hidden. It is known as a latent heat. And for its detail, yes, we have go. Yes, in our theory. This okay. So before going to that theory, we have arise some question here by learning this simple shown activity. Yes, okay. Which questions are arise here? So such arising question I have puts in front of you. Yes, with the help of that screen. So observe the question and try to answer the question. So come to the question. So it's a very yes okay interesting question arise. Yes, when we follow the experimental activity. That is a which question here means heat is being supplied constantly. यहाँ पे heat कैसी थी? Constantly थी. Yes, but no temperature change is occurring. लेकिन यहाँ पे कोई temperature change यहाँ पे occur हो रहा है क्या? नहीं. And where is the heat is getting hidden? मग ही हीट कुठे गेली कुठे लपली गेली जस्ट यही हमें यहाँ पे देखना है और ये जो हिडन हीट है वही लेटेंट हीट है ना क्योंकि हीट तो हम कंटिन्यू दे रहे थे हीट कंटिन्यू देते समय भी टेम्परेचर में बढ़ाव भी हो रहा है लेकिन एक्चुअली कोई भी फेजेस चेंज होते हुए नहीं दिखाई देते है ना ये इतना हमने यहाँ पे देखा है तो 99.9 डिग्री सेल्सियस तक जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ठीक इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है हीट भी कंटिन्यू होती है लेकिन फेज में हमें बदलाव नहीं दिखाई देता है तो इस तापमान तक रेजिंग टेम्परेचर तक इट्स ओके दैट इज बिलो 99.9 तक हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता है तो वहां पे जो हीट एब्सॉर्ब की गई वाली है वो कहाँ है यस यस दैट इज अ हिडन हीट एंड सच हिडन हीट यस वी हैव लर्न हियर दैट इज अ दैट्स हिडन हीट इज नथिंग बट दैट इज अ लैटेंट हीट सो वी हैव ट्राई टू डिफाइन द लैटेंट हीट अभी हम लैटेंट हीट को डिफाइन करेंगे ध्यान दीजिए सिंपल सा है चलिए सो वी हैव go to the latent heat. Yes, there are definitions. Yes, so how the definitions we have get here? Latent is nothing but that is a hidden energy. That is a hidden heat energy. The heat energy absorbed or the liberated in a change of a phase is not externally manifested by any rise or a fall in a temperature. That is a latent heat. देखिए बेटा I have again read it. Remember, it's a very important definition. Yes, it's according to the exam it's important. The heat energy absorbed or the liberated in a change of a phase is not externally manifested by any rise or fall in a temperature. जैसे टेम्परेचर में बढ़ा हो या फॉल हो डिक्रीज हो तो भी हमें फेज में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है ऐसी लेकिन सब्सटेंस तो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते रहता है ऐसी जो हिडन एनर्जी होती है दैट्स वन हैव अ लेटेंट हीट ठीक है लेटेंट हीट की अगेन वी हैव गो टू नेक्स्ट फर्दर सिंपल डेफिनेशन चलिए अभी हम यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ट्राई करेंगे बस इट्स अ वेरी सिंपल हियर देखिए बेटा एक सिंपल डेफिनेशन को हम अभी ट्राई करते हैं yes, which is the simple definition yes it is considered to be the hidden in the substance ये substance में hidden होती है ना उस water में थी फिर तो continue चल रहा था लेकिन can you get the any their change in their phase change in their state no ठीक है but when it reaches 100 degrees Celsius that time we have get the change in their phase that is a vaporization process is goes carried here yes okay at a reach certain 100 degrees Celsius and above 200 degrees Celsius again we have tried to continue heat it that time does not show the changes in their states it's remain constant it's okay कब तक constant था बेटा वो that is it's get the unless and until to the vapor
Yes, mister, we have take the liquid, and liquid we have continue to heat, and due to that continue to heat, and we have keeps its continuous heating process unless and until yes up to the vapor forms. Yes, okay. That time yes we have get the that is one idea about the latent heat. So after then we are going to the next slide. Yes, okay, which is learn in our notebook. है ना? Given in our notebook. So we have learned here. So this is one of our arranged experimental. Yesterday's I have tell us to requirement there. Just okay apparatus here, which is the requirement apparatus that is one of our beaker. Just okay tripod stand, Bunsen burner, stand, thermometer, such like that, and ice crystal. Okay. Again we have take the one graph paper, pencil, like this simply. Okay, and we have carry the experimental activity. In that experimental activity, yes, in a glass beaker, we have take some ice crystal. Yes, okay, which is filled up to the near about more than half beaker. Yes, okay. Actually, we have put on the that is a given stand and continue to heat after the arrangements. Yes, okay. We have checked the arrangements and after the completion of the arrangement, we have start to heating. Okay, and when we have heated, that time heat is a continuous. Yes, okay, continuous quantity, and due to that continuous heat, means the ice crystal absorb the heat energy. Ice crystal absorb the heat energy. Means the ice convert into water. Just okay, and such like that. So heating is goes continuous here. Yes, I have said to you. Yes, how we have continue to heat. Yes, up to the that is unless and until yes is from the vapor here. That's okay unless and until is from the liquid here. जैसे vapor liquid तब तक हमें इसको heat को क्या करना है कंटिन्यू रखना है and measure the readings yes per minute time per minute जो जो का जो क्या टाइम मिलेगा उससे हमें उसके रीडिंग्स लेने हैं ठीक है and we are getting readings yes we have put into your observation table and plot the graph versus time versus degree celsius or temperature ठीक है and such like that we have arranged the graphs plot the graph ठीक है that is the time and degree celsius so that time what we have learned here that is a graphical representation show when you start to heat that time up to the 4 degrees celsius or up to the 4 minute times means ice crystal does not show any change here it remains same but when it reaches or the 4 degrees celsius that time it goes to the change in their state at a fixed point that is which that is a and b at a b position it show the change in phase but the AB state is the same, phase is the same here. But at a reach a certain B point, that time phase goes to the changes. Means the yes, means the ice crystal solid goes to the liquid, solid goes to the liquid, and such liquid phase is it's remains same up to the 99.99 degree Celsius. And when it reaches 100 degree, that is the C point, is चेंज इन देयर फेज शो चेंज इन देयर फेज में बदलाव मिलता है ठीक है बेटा एंड सच शो phases changes in their phases at a certain point C and B and C ठीक है बट इसके पहले यहाँ पे कोई टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन कोई चेंज दिखाई दे रहा है क्या नहीं तो यहाँ पे जो हिडन हीट है यही जो हीट होती है यही लेटेंट हीट है जैसे ए बी में यहाँ पे लेटेंट हीट है ये बी से लेकर यहाँ पे सी तक लेटेंट हीट है सी से लेकर यहाँ पे डी तक ये लेटेंट हीट मिलेगी जैसे यहाँ पे हम हीट कंटिन्यू करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ये स्टेडी रहता है इसमें कोई बदलाव नहीं आता है बट देखिए कैसे कब तक बदलाव नहीं आता है बेटा जैसे until and unless वेपोराइजेशन है ना until and unless वेपोराइजेशन तब तक ये कैसा बदलाव सेम कंटिन्यू जैसे जब तक वो वेपर में कन्वर्ट होता है पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तब भी हमें यहाँ पे कोई ऐसे टेम्परेचर में बदलाव नहीं दिखेगा वो स्टेडी एंड स्टेबल रहेगा ठीक है तो देखिए बेटा दैट इज अ चेंज इन देखिए बेटा स्टेडी टेम्परेचर सेम फेज है यहाँ पे स्टेडी टेम्परेचर सेम फेज है अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन फेज चेंज इन टेम्परेचर
change in temperature, change in phase. ठीक है, तो such like that. So in this way we have get the idea, somewhat get the one concepts. What is the latent heat? Yes, okay. We have learned here by this experimental activity. It's a very simple here. ठीक है. This is one our एक simple attempt to yes to detect the latent energy. Yes, by this experimental activity. Yes, we have learned detail. Yeah, this graph. Yes, okay. Read the given theory in your book. Again, we have go to the next point. Yes, okay. Before going to that next point, yes, okay. Here some remembering points. Yes, which are the remembering point here? देखिए इस डायग्राम को देखना है हमें. एक्चुअली यहाँ पे हमें रिमेम्बरिंग पॉइंट में क्या मिलता है बेटा? द हीट. एक्चुअली जो हीट होती है द टेम्परेचर इज रिमेन. यहाँ पे कैसा है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट है. पूरी तरह से टेम्परेचर कैसा होता है यहाँ पे? रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द टोटल यहाँ पे yes transmissions of the constant temperature of which the ice consisting or the ice crystals yes is converts into water is called as the melting point of that solid or the melting point of that ice है ना. तो इसका हम यहाँ पे melting point बोला जाएगा. ठीक है. एंड इस वन है वो सिंपल देयर. समझ में आ रहा है? देखिए यस मैं एक बार बताता हूँ. द सिंपल सा है. कैसा है यहाँ पे बेटा? जैसे ये देखिए ध्यान दीजिए डायग्राम के ऊपर. ये आइस क्रिस्टल है. द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. यहाँ टेम्परेचर कैसा है? रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द क्या बेटा यहाँ पे? ट्रांजिशंस. दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच आइस कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ आइस. यही आइस का क्या बनेगा? मेल्टिंग पॉइंट बनेगा. ये यहाँ पे मिलता है. और दूसरी टर्म्स यहाँ पे मिलती है. देखिए आप इस डायग्राम को देखना है. दूसरी टर्म्स यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी? एक सिंपल सी टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी, आइडेंटिफाई होगी. एक देखिए बेटा ये सिंपल सी टर्म्स में जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है? एक सिंपल सा अभी ध्यान देना है. द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी. ये जो हीट है ना, ये देखिए हीट. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. एक रेगुलर टेम्परेचर यहाँ पे एब्सॉर्ब करता है ना आइस क्रिस्टल. यस, एब्सॉर्ब ऑन अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है बाय यूनिट मास. यूनिट मास जैसे कि 1 किलो होगा, से 2 kg होगा. यस, अकॉर्डिंग टू दैट कंसिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ दैट पॉट. जस्ट ओके. यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज. ये क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है. इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट. अभी देखिए ये अमाउंट ऑफ यहाँ पे कौन था? सॉलिड था. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ क्या बेटा? यहाँ पे फ्यूजन. देखिए बेटा मैं यहाँ पे कंटिन्यूली और एक बार बताता हूँ. द अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान दीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट आकृतीला बघायचं, ग्राफला बघायचं आणि लर्न करायचं. ठीक आहे. द अमाउंट ऑफ हीट energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called as a specific latent heat of a fusion. Specific latent heat of क्या बेटा? Fusion. Again we have go to the next term. Yes, which is the next term? That is amount of heat. अभी दूसरा वाला. यहाँ पे अभी ये लिक्विड बना, आइस क्रिस्टल यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, फिर लिक्विड यहाँ पे फिर में वेपर में आ रहा है. तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर by unit mass of a liquid to convert into the gaseous phase is called as a specific heat of a vaporization. Specific heat of a vaporization. हेच समजून घ्यायचं व्याख्या बरं का. ठीक आहे. अजून एकदा बघा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब कर रही है हीट. यस, ओके. एब्सॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ द लिक्विड. यहाँ पे लिक्विड है. पहले कौन था? आइस क्रिस्टल था इसलिए सॉलिड बोला था. लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड है. टू कन्वर्ट इनटू गैसेस. अभी गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है. यस, इज कॉल्ड एज a specific latent heat of vaporization. इसको क्या बोलना है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. करते हैं विद्यार्थी मित्रांनो. तो देखिए ऐसे यहाँ पे बदलाव हमें यहाँ पे मिलते हैं. इससे वेरी इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? ये दो टर्म्स यहाँ पे आईएमपी है. और इन आवर सराउंडिंग, यस, or in our daily life there are different kind of substances. Yes, okay. And these substances have not a same latent heat of fusion. Yes, okay. As well as the latent heat of a vaporizations is not a same here. They are the different.
yes, according to the different substances. And such examples, yes, are given in your book, yes, in a tabular forms. Such a table. Yes, some substances are given to you as like ice. Yes, already we have shown by the experimental activity in your book. Another is copper. Yes, we have remember always because it's very important according to the exam you as ethyl alcohol, gold, silver, leads, etc. Their melting point जैसे कि वाटर का हमने देखा है melting point यहाँ पे क्या है that is a zero boiling point यहाँ पे कितना मिल रहा है 100 जैसे ओके देखिए melting point तो melting point is nothing but what that is a specific heat of fusion लक्षात ठेवा मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन और ये जो बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन चलिए तो ये अलग अलग मिल रहे हैं हर एक सब्सटेंस की सेम नहीं होती है ठीक है ना बेटा तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन जैसे कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये अलग से होती है अलग से एनर्जीज यहाँ पे मिलती है उसका यूनिट है यहाँ पे किलोजूल पर किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम किलोजूल पर किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम जैसे कि एमकेएस एंड सीजीएस एसआई और सीजीएस बोलते हैं इसको ठीक है बेटा तो इसे यहाँ पे टेबल दिया इसको लर्न करो इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सोचने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे तो चलिए अपने ब्रेन को थोड़ा सा हम उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा खुला करने के लिए हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए वाले उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं यस Is the concept of the latent heat applicable during the transformation of the gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to the solid phase? चलिए इसका मतलब समझ में आ रहा है जैसे कि देखिए बेटा कोई भी जैसे अप्रकट ऊष्मा होती है ना हर एक पदार्थ की हर एक चीज की तो ये अप्रकट ऊष्मा क्या होती है बेटा जैसे की वायूचे द्रवात रूपांतर होताना किंवा द्रवाचे स्थायिक रूपांतर होताना त्यांना सुद्धा ते लागू पडतं का जस्ट ऑफकोर्स उनको भी ये लेटेंट हीट जैसे क्या होगा बेटा उसको भी ये एप्लीकेबल होगा आर यू क्लियर अगेन वेयर डज द लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये लेटेंट हीट कहाँ चली जाती है जैसे मैंने बताया ना ये छुपी वाली एनर्जी होती है छुपी वाली हीट होती है तो इट एब्सॉर्ब बाय द सबस्टन्स इज एब्सॉर्ब बाय द सबस्टन्स लक्षात येते त्या आकृतीच्या द्वारे आणि त्या डायग्रामच्या द्वारे आपण पाहिलं येस द चॅप्टर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टिपिकल ऑल्सो यहाँ पे केवल अंडरस्टँडिंग होना चाहिए समजलं तरच हा पाठ आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल किंवा तो चांगला त्याचं अंडरस्टैंडिंग हुई जिसको कि जैसे कि यहाँ पे रेक्टिफाई करना यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है ये समझ में नहीं आएगा ठीक है बेटा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर सो वी हैव ट्राई टू रीड इट्स डीलिंग पॉइंट्स जैसे कि एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सी हियर लेटेंट हीट डेफिनेशन आईएमपी यहाँ पे आर यू क्लियर इसके बाद यहाँ पे क्या है जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस यहाँ इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इसके बाद जैसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन जस्ट ओके वेपोराइजेशन जस्ट not evaporation vaporization is very important here these terms are very important yes so this is about the latent heat yes okay tomorrow we are going to the next point with their experimental activity so we have stopped here thank you